Hello everyone, welcome back to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. Today we are going to resume with our The Hindu newspaper analysis dated 25th of July 2022. The newspapers that we have missed, we are going to upload them as well in individual news articles lecture series. So you are going to watch that if you want to cover the previous newspapers as well. तो हम ना छोटे छोटे स्निपेट्स रिलीज करेंगे जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उन न्यूज़पेपर्स के जो हमने एनालिसिस करने से हम चूक गए थे या हम भूल गए थे अपलोड करना, तो उन सभी न्यूज़पेपर्स का बैकलॉग जो है आप टेंशन मत लीजिएगा, हम उसे कंप्लीट करके आपको देंगे इंडिविजुअली. डोंट वरी अबाउट दैट. Let's get started with today's newspaper analysis. So on page 1 you will see this article, high alert as Delhi reports monkeypox. तो दिल्ली में भी अब केस आ गया है, monkeypox का पहला केस, इंडिया का 4th केस है. एंड द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट दिस केस इज दैट दिस पर्सन हु वाज इन्फेक्टेड विद मंकी पॉक्स इन दिल्ली हैज नो हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रैवल. इंडिया में ही थे, बाहर कहीं ट्रैवल नहीं किया, फिर भी इन्हें मंकी पॉक्स हो गया. तो यहाँ पर ना यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मंकी पॉक्स इज नॉट जस्ट स्प्रेड फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, इट इज ऑल्सो स्प्रेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन. अगर इन्फेक्टेड एनिमल को आप टच करते हो जिसके स्किन पे लेजन्स हो रहे हैं या रैशेज हो रहे हैं या वो इन्फेक्टेड है मंकी पॉक्स से, उस एनिमल को आप टच करते हो तो उस केस में भी मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड हो सकते हो. Now we need to understand some of the important facts about monkeypox because WHO, that is the World Health Organization, has recently declared monkeypox as a public health emergency of international concern by international concern का public health emergency इसको करार दे दिया गया है WHO के द्वारा. That means why this tag is given? This tag is given to a particular disease so that countries can put in efforts to stop it from converting into a pandemic. Pandemic में कन्वर्ट ना हो वो डिजीज, इसीलिए ये टैग दे दिया जाता है एक डिजीज को ताकि कंट्रीज अब अलर्ट हो जाएं और इसके ट्रांसमिशन को रोक सकें. सो एज सून एज इट बिकम्स पैंडेमिक, WHO has warned the nations to stop its transmission, to control its transmission. So the first case of monkeypox in humans was identified in 1970. वैसे तो monkeypox was discovered in 1958, but it was discovered in humans. First case of human getting infected with monkeypox came in 1970 in the Democratic Republic of Congo. Now it has become endemic in parts of Central and West Africa. So West Africa and African continent has been battling with this virus since 1950s. 1950 के दशक से अफ्रीका ना इस वायरस को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. अब जब ये स्प्रेड हो रहा है तो देखो देयर आर बोथ गुड एंड बैड थिंग्स अबाउट इट. फर्स्ट थिंग इज द good thing is that we know how to battle with this virus. Why? Because Africa has been battling with it since 50s, so we know what kind of precautions we need to take in order to stop its transmission. इसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हमारे पास काफी रिसर्च है जो अफ्रीका 1950 से करता आ रहा है. बट द बैड थिंग इज दैट yes, it is spreading right now and we need to be more alert and careful in our dealings. So for example, अगर आप बाहर जा रहे हो, wear gloves or carry your sanitizers and mask आपको कैरी करना है because respiratory droplets के थ्रू भी ये स्प्रेड होता है. आप किसी को भी चीज को छूते हो तो उसके बाद सैनिटाइज कर लो, अपने हाथों को धो लो अच्छे से, ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्लव्स आप लेकर चल सकते हो, ठीक है. नाउ मंकी पॉक्स में ना कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है. वैसे तो दिस वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड वेरियोला which is also seen in smallpox. So right now because this monkeypox it looks like something like smallpox only and same virus family both are sharing, that is why we are using the precautions of smallpox के जो clinical management होता है हम उसको यूज कर रहे हैं monkeypox के केस में. And it is said that if you have been taken the smallpox injection, जब आप छोटे थे तो smallpox का इंजेक्शन सबको ही लगता है. when all of us were small kids we had that injection, right? So अगर आपको वैक्सीनेशन हो रखा है स्मॉल पॉक्स का तो 85% चांसेस हैं कि बहुत माइल्ड, अगर मंकी पॉक्स होता है उस इंसान को तो बड़ा माइल्ड रहेगा, ठीक है. इफ अ पर्सन हैज टेकन द वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, इवन इफ आफ्टर दैट the person contacts with this particular virus, monkey virus, then there are 85% of the chances that the disease severity will be very mild. But basically the young kids, the newborns and the people whose immunity system has been compromised, either they are having diabetes, high BP or liver ailment, kidney ailment, कोई भी ऐसी बीमारी जिससे उनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है, तो उस केस में उन लोगों के लिए काफी सीवियर है मंकी पॉक्स, ठीक है. ये पॉइंट आपको याद रखना है.
and again it takes 2 to 4 weeks to show us the symptoms. 21 days के अंदर अंदर symptoms निकल कर आते हैं. So we are going to study that as well. Now it is spreading predominantly among but not exclusively in gay, bisexual and MSM communities. Now वैसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि exclusively सिर्फ इसी community में ये spread करता है, नहीं, ऐसा नहीं है, right? बट प्रीडोमिनेंटली पाया गया है इन वेस्टर्न कंट्रीज की गे, बाइसेक्सुअल, एमएसएम कम्युनिटीज के बीच में भी इसका स्प्रेड काफी तेज है. ठीक है, एमएसएम मींस मेन हु हैव सेक्स विद अदर मेन. नाउ हियर द एक्चुअल सोर्स ऑफ ओरिजिन हैज नेवर बीन आइडेंटिफाइड. तो अभी भी इट्स अ मिसनोमर राइट नाउ, बट इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ वायरसेस कॉल्ड वेरियोला, व्हिच इज आल्सो द सेम वायरस व्हिच इज सीन इन स्मॉलपॉक्स. नाउ दिस वायरस monkeypox is less severe, less contagious. It's a zoonotic virus. It can infect humans also and animals also. Symptoms appears within 2 weeks since infection can last for 2 to 4 weeks. 2 हफ्ते के अंदर अंदर symptoms निकल के आते हैं, 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं symptoms को खत्म होने में. तो यानी कि आपको 21 डेज का वही कोविड की तरह आइसोलेशन में, 30 डेज के आइसोलेशन में जाना ही पड़ता है इस वायरस से अगर आप इन्फेक्ट होते हो. Now here the symptoms are fever, headache, muscle pain, lethargy मतलब थकावट, along with rashes and blisters on face, palm, feet, mouth, eyes और genitalia. Now here this particular monkeypox virus ना, you do not have to be very scared of it. बहुत ज्यादा डरने की भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोलाहल मचा दो आप और डर के इधर उधर भागो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये ना एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज है, बिकॉज इट रिजॉल्व्स वेरी स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. वैसे तो ट्रीटमेंट इसका भी स्पेसिफिक आया भी नहीं है, ठीक है, तो हमें एहतियात तो बरतना ही है, बट वैसे भी अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है कुछ 20 से 30 दिन के अंदर अंदर. बट पीपल हु आर एट हायर रिस्क आर न्यूबॉर्न्स, यंग चिल्ड्रन एंड पीपल विद अंडरलाइंग इम्यून डेफिशिएंसी. सो इफ in your family you have newborns or if you have old people, आपकी grandmother, grandfather है, या फिर कुछ कोई ऐसे लोग जो immunity compromised है, तो इस केस में आपको precautions लेकर चलने ही चलने हैं. प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि आपकी वजह से, केयरलेसनेस की वजह से कहीं उन लोगों को प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े. सो बी वेरी केयरफुल. देखो, इट इज नॉट दैट यू आर नॉट गोइंग टू नाउ स्टेप आउट, आपको अपने कमरे में बंद कर लेना है खुद को, नहीं. जस्ट दैट whenever you step out, please take precautions. Now the first outbreak of monkeypox outside Africa was in US in 2003, and the transmission of this virus is from animals to humans and from humans to humans as well. Okay. Now there are few factors that are advantages in this particular situation right now. हमारी country में भी कुछ factors हैं जो अभी advantages हैं. First is that there is a huge number of information which is available on this virus, because Africa has been battling with it since 1950s. So we have a huge number of information about this virus to deal with it. Okay. So all the thanks and gratitude goes to the researchers from Africa who have been able to contain this virus outbreak for decades. Now there is also availability of fairly effective vaccine despite the logistical issues, because all the children almost हमारे country में भी हम देखें तो they have been vaccinated with smallpox injections. तो आप लोगों ने भी, मैंने भी smallpox का injection तो सबने बचपन में लिया था, ठीक है, तो उस केस में भी काफी severities की less हो जाती है. Plus genomic surveillance which was used during the COVID-19 pandemic is also helpful right now, because through that we can do the contact tracing. Okay, if a person is infected with this virus, we can find out the contacts of that person who came in close connection with that particular infected person. Plus smallpox and monkeypox now, they have genetic similarities, so it's very right now efficient and easy to deal with this virus, keeping in mind that the same virus family is shared between both of them. ओके, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है. नाउ देयर आर अदर रीजंस आल्सो व्हाई दिस मंकीपॉक्स इज बिकमिंग अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी. देखो यहाँ पर ये वी नो दैट वी हैव टू रियलाइज फाइनली व्हाट इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली इज हर्टिंग द वर्ल्ड राइट नाउ. ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट लोगों दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. इंक्रीजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द ग्लोब इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. ग्लोबल ट्रैवल, जो अनबिक्यूटस ग्लोबल ट्रैवल हो रहा है, एफर्ट्स फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कोऑपरेशन राइट नाउ कैन बी सीन जब से 2020 से कोविड-19 का इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मंकीपॉक्स वायरस. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. बिफोर वी मूव अहेड, हियर इज अ वेरी क्विक अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE and you are looking out for expert guidance and coaching and
and mentorship. देखो on Unacademy we are here to just simplify your journey. आपकी जर्नी को जितना easy हो सके उतना easy बनाने के लिए हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हैं. प्लस इतना अच्छा इनका प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इसकी ऐप एक्सेसिबिलिटी भी बढ़िया है, क्लासेस एक्सेसिबिलिटी भी बढ़िया है. प्लस नाउ दे आर कमिंग अप विद Unacademy अनलॉक ऑफर wherein they are giving you 20% discount on all your UPSC CSE subscription till July 29, 2022. Now अगर आप 12 month का combo subscription ले रहे हो, 12 months combo subscription, here we will teach you, we will complete the syllabus of prelims, we will complete the syllabus of mains, all the papers, and along with the essay, ethics, सारे papers, and optional as well. Plus we will give you the facility of test series for prelims, answer writing series for mains, and we are going to cover the PYQs, previous year questions with their solutions. We are going to give you 20 GS books which will cover all the syllabus of entire pre-mains. सारा syllabus cover होगा इसमें 20 GS book की series में, along with current affairs, previous year question papers, everything. Okay, and we are giving you doubt clearing session. So if you have any doubt regarding any subject at any point of time, day, you can come on this platform and you can get your doubts resolved. Everything in just 55,000 rupees. 55,000 रुपए में आपको ये सब कुछ मिल रहा है. वहीं अगर आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जाओ, some students they go to Delhi and other metropolitan cities for their preparation and they end up wasting 3 to 5 lakhs in their preparation. But here Unacademy is saving your efforts to come to the metropolitan cities at the comfort of your home. You can get all these features and you will get 10% extra discount if you use my code ARPITA10. मेरा कोड अर्पिता10 यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 55,000 में से भी ना आपका यहाँ पर 5,500 तो कम हो ही जाएगा. ये आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, एवरीथिंग एट जस्ट वन प्लेटफॉर्म एंड दिस ऑफर इज ओनली टिल 29 जुलाई. सो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन सिंप्लीफाइंग योर जर्नी ना, you can subscribe to Unacademy Plus today. Coming on to the next important article, wind power rates may bottom out. Here they are talking about the reverse auction case. Okay, why reverse? Because of reverse auction, the industries are right now facing losses. So the article says last week, Ministry of New and Renewable Energy said it would be doing away with the practice of reverse auction. तो Ministry of New and Renewable Energy का कहना ये है कि reverse auction के process को खत्म करने वाले हैं ये लोग. When companies bid to offer the lowest price while awarding contracts for setting up of wind energy projects. However, wind industry experts say that this alone is not going to improve the sector's fortune. जो wind energy sector है, उसके profit को बढ़ाने के लिए, उसकी income को बढ़ाने के लिए reverse auction को ministry खत्म करने जा रही है. Let us understand what exactly is reverse auction. देखो, there is a normal auction which is known as forward auction. What happens in a auction? बोली लगती है auction में. ठीक है, ऑर्डिनरी ऑक्शन में क्या होता है, एक बोली लगती है ना, वेयर बायर्स दे कम्पीट अमंगस्ट ईच अदर टू ऑब्टेन गुड्स और सर्विसेज बाय ऑफरिंग हाई प्राइसेस. ओके, यानी कि एक सेलर होता है, सेलर स्टैंड्स हियर विद इट्स पोसेशन गुड्स और सर्विसेज एंड द बायर्स जो है, जो खरीदने वाले होते हैं, वो बोली लगाते हैं और जो सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगाता है उसको वो चीज मिल जाती है. द हाईएस्ट बिडर गेट्स द थिंग, राइट. बट इन द रिवर्स ऑक्शन केस, sellers bid for the prices at which they are willing to sell their goods. Here the seller will come, सेलर आ जाएगा. ठीक है, सेलर बोलेगा कि भाई, बहुत सारे सेलर्स होंगे. ठीक है, सेलर्स विल कम ओवर हियर एंड दे आर गोइंग टू बिड देयर प्राइस. ठीक है, और हियर द बायर विल स्टैंड एंड दे आर गोइंग टू ऑफर देयर प्राइसेस कि यू कैन पे अस दिस मच एंड विल गिव यू द गुड्स. ठीक है, सेलर अपने प्राइस ऑफर करेंगे कि आप हमें इतना दो, हम आपको गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, एंड जिसका सबसे ज्यादा बिड होगा, जिसका सबसे कम बिड होगा उसको बायर सिलेक्ट करेगा. तो उल्टा हो जाता है रिवर्स ऑक्शन के केस में. हियर द बायर इज वन, सप्लायर्स कम टुगेदर, दे बिड एंड द सप्लायर हु इज बिडिंग द लेस अमाउंट ऑफ प्राइस विंस द ऑक्शन. So here sellers compete amongst each other to obtain business from the buyer and prices here typically decrease because sellers are going to underbid each other. So here buyers put up a request for a required good or service. For example, A over here is a buyer. ये है यहाँ पर buyer and he is putting up a request. ये बोल रहे हैं कि मुझे ये particular good है, ठीक है, जो चाहिए, I want this good, I am putting my request out there. Now the sellers, these are the sellers. ये हो गए आपके यहाँ पर sellers. ठीक है, this is C, D, E and F. So the sellers are now placing their bids for the amount they are willing to be paid for the goods and services. ठीक है, for example, seller C is saying I'll take only rupees 100 and you can give me the particular good. ठीक है,
तो आप मुझे ये गुड दे सकते हो, मैं सिर्फ 100 रुपए लूंगा. Seller, now he will say 100 रुपए तो ज्यादा है. B will say I'll take only rupees 80, give me the good. Then E will say I will take only rupees 50, and F will say I'll take only rupees 20 and give me the good, and the buyer will go to the seller F. Okay, so the industry, wind power and industry is saying that we are facing losses because यहाँ पर underbid हो रहा है. आप कम से कम प्राइसेस में आप गुड्स एंड सर्विसेज हम आपका ले रहे हैं, राइट? तो हमें नुकसान हो रहा है. वी आर फेसिंग द लॉसेज राइट नाउ. दैट इज व्हाई मिनिस्ट्री इज सेइंग वी आर गोइंग टू रिमूव द रिवर्स ऑप्शन, from this ministry, from this particular industry. Reverse auctions have gained popularity because now, because of the pandemic, online auctions are happening. So that is why reverse auction came into the forefront. It is being used as a competitive procurement method. Okay. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं. देखो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, इट इज सेइंग Andhra Pradesh on alert as water rises in Godavari. Now in 2017, there were so many articles in the newspaper regarding Brahmaputra river. Small articles like water in the Brahmaputra river is rising and this and that. And students, they used to ignore those articles because छोटे-छोटे articles होते थे, students ignore कर देते थे. And in 2017, a question came in prelims on Brahmaputra river. And that is why it's very important whenever any river is in news, whether it's a short article, please go through it. So Godavari river is the largest river system in the peninsular India. It is also known as Dakshin Ganga, very sacred river because यहाँ पर आपका जो कुंभ का मेला है वो भी लगता है. ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ठीक है? Now here another important point is that this particular Godavari river basin, it extends over which states? It extends over यहाँ पर the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, in addition to the small parts of Madhya Pradesh, Karnataka and Puducherry. You have to remember the states. Now आपको ये याद रखना है कि from where it came, it originates, right? This is very important. So the source of this river is from Trimbakeshwar in Maharashtra, and then it flows and outfalls into the Bay of Bengal. Tributaries are Parvara, Purna, Manjara, Penganga, Vardha, Venganga, Indravati, Maner and Savri. Now Pranhita is also a tributary which is a collection of Penganga, Vardha and Venganga river. ठीक है, ये आपको याद रखना है. The next important article, this is a picture on page 1 which shows that Olympic gold medalist Neeraj Chopra competing in the men's javelin throw final during the World Athletics Championships in Eugene, Oregon in the US. He won the silver medal. So here we need to understand about the World Athletic Championship. 2022 में it is being held in USA. In 2025 it's going to be held in Tokyo in Japan. 2024 में it will be held in Croatia, and 26 में it will be held in Florida. So you have to remember the places, the countries where this championship is getting conducted. Okay. The next important article is related to the fiberization before the 5G deployment. So we know about the 5G technology which is currently being talked about, highly talked about, and अभी आपको पता होगा कि इसके ऊपर काफी सारे issues निकल के आ रहे थे 5G deployment के ऊपर, that how it's going to reach to the rural areas, etc. And even Juhi Chawla was involved when she filed a case against 5G technology entering India, but again she did not have some valid point, that is why she lost the case. तो यहाँ पर we need to understand about fiberization. यहाँ हमको ना fiberization के बारे में पढ़ना है. What exactly is fiberization? It's a process of connecting radio towers with each other via optical fiber cables. ठीक है? तो through the optical fiber cables, the radio towers are connected with each other so that you can get the internet, you can get the technology. It helps provide full utilization of network capacity and it carry large amount of data once 5G services are rolled out. ठीक है, fiberization तो अभी भी start हो गया है. एयरटेल का आपने अगर देखा होगा भी, recently I got my connection and the fiber cables were laid out, right? So through that also I came to know about the fiberization. तो जो भी आपके आसपास होता है ना, थोड़ा आप अपनी चेतना को थोड़ा सा जागरूक रखें तो आपको भी समझ आएगा कि आपके आसपास ही कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं. Now what will happen to the rural areas? Fiber cables, right now they are not reaching the rural areas. So in that case, government is going to use the satellite communication which can facilitate the 5G broadband connectivity to the areas where terrestrial infrastructure cannot be constructed.
restricted. तो उन एरियाज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू इंटरनेट पहुंचाया जाएगा. Even in the 2020 independence speech, Prime Minister Modi said that my vision is to connect every village in country through the OFC, that is the optical fiber cable, in 1,000 days. But to reach this target, India needs to invest 2.2 lakh crore rupees, and उससे ना सिर्फ 70% ही fiberization होगा. Now here another important point is, यहाँ पर आप देखोगे what is fiberization जहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते. तो यहाँ पर they say that it's going to aid in providing additional bandwidth. What exactly is bandwidth? Let us understand that. यहाँ पर ना आप अपने notes में इसको लिख लो. Please write it down in your notes also. So bandwidth ना sometimes it is often mistaken for internet speed. Actually it is not internet speed, it is actually the volume of information. Please write it down. इसको लिख लो. ये speed नहीं होता. It is the volume of information that can be sent over a connection in a particular amount of time. Okay, so it is the maximum amount of data transmitted over an internet connection in a given amount of time. Internet connection का use करके volume of information जो आप transmit कर सकते हो उसको हम बोलते हैं bandwidth. This is important concept for prelims. Prelims के लिए काफी important concept है and it is calculated in Mbps. Mbps में यानी कि megabits per second में इसको calculate किया जाता है. ठीक है, so its fiberization is going to help in providing extra bandwidth and stronger black hole support. Backhaul support क्या होता है? What is backhaul support? It is a component of larger transport that is responsible for carrying data across the network. So backhaul is transmitting a signal from remote site or network to another site. That is backhaul. ठीक है, इसको हम बोलते हैं. ये पॉइंट याद रहेगा आपको. It impacts your home network as well. ठीक है. Now as a result, fiber backhaul remains an important part of transport across all telecoms because it represents the part of the network that connects core of the network to the edge. एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है ये backhaul. तो basically it's a component of larger transport mechanism in internet connectivity. All right. Now fiber-based media, which is known as optical media, provides almost infinite bandwidth and coverage. अगर bandwidth is maximum amount of data which is transferred. तो आपको ये point याद रखना है optical media के बारे में. ठीक है. Now another important point, we studied about the satellite based communication as well. So let us understand that also. हमने satellite based communication की बात की थी, वो भी समझ लेते हैं यहाँ पर. So here, can satellite communication help in 5G deployment and improve the network backhaul? Processing power needs to be distributed from centralized data centers to edge servers closer to the users. We know that. Okay, processing power जो है centralized center से हम end users तक पहुंचाते हैं. Satellite communication here can provide high capacity backhaul connectivity. We talked about backhaul. What is backhaul? It is the transport connection between transportation system. You can say internet transportation system between one point to another site. Okay, so satellite communication से ना high capacity connectivity मिलेगी आपको to large number of edge servers. Then it is going to complement the terrestrial network. ये जो आप towers लगाते हो उसको complement करेगा ये. So it is very cost effective scalability provide करेगा satellite communication. It can facilitate 5G broadband connectivity also to remote areas जहाँ पर towers लगाने possible नहीं होते हैं. And here the space based backhaul will also provide disaster relief services. Emergency response teams यहाँ पर आपको मिलेंगी. ठीक है, and for that we need to use low earth orbit satellites. This is very important for prelims. Low earth orbit satellites will be well suited for this. Okay, for direct connectivity and for backhaul connection. The next important article, J&K always will be an integral part of India. So Defence Minister Rajnath Singh said that Jammu and Kashmir would always be an integral part of India, and Pakistan occupied Kashmir and Gilgit-Baltistan. They were illegally occupied by Pakistan. Okay, he described Article 370 as an artificial barrier. So what is artificial barrier? This 370 article which he called artificial barrier, जिसको remove 2019 में किया गया. So Article 370 was added in the Indian Constitution as a temporary provision in 1949. It exempted Jammu and Kashmir, permitting it to draft its own constitution and restricting Indian Parliament's legislative powers in the state. So right now it stands removed. That you have to remember. This Article 379 it was introduced into the draft constitution, as Article 306A by N. Gopalaswamy Iyengar as well. Basically, it was used to limit the power of Parliament to make laws for Jammu and Kashmir.
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पीएम टू पे ट्रिब्यूट टू हरमोहन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हम अच्छे से। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू एड्रेस द इवेंट सेलिब्रेटिंग द 10th डेथ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी हरमोहन सिंह यादव. Okay, let's understand about him. He was a close friend of Samajwadi Party patriarch Mulayam Singh Yadav, a two-time Rajya Sabha member. He was a leader of the community, a very towering figure, and also he was known for his harmonious living, because during the 1984 when the Indira Gandhi assassination took place, anti-Sikh riots were going on, he saved a large number of lives. Okay, so he set an example of communal harmony. He received in 1991 the Shaurya Chakra also. So he was an educationist, independence activist, social worker, politician. Now let us answer this question. Chaudhary Harmohan Singh Yadav, whose 10th death anniversary celebration is going to be observed recently, he was a leader of which state? Correct answer is, यहाँ पर आप देखोगे, correct answer है आपका B, उत्तर प्रदेश. Okay, तो ये थे आपके आज के important articles that we have analyzed. So I guess you enjoyed this lecture. If you really enjoyed it, please let me know in the comment section.